हाँ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेक्शन 50.4 है। बुक जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड द सोशल साइंसेस। ऑथर है फ्रैंक एस बटनिक। ठीक है, ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर्स। इससे पहले हमने 50.2 कर लिया है, 50.4 हम देख रहे हैं। तो इसमें हम जो आज जो एक्सरसाइज करेंगे वो है 1 से लेके 24। अब मैं इस सवाल को रीड कर रहा हूँ। इन एक्सरसाइज 1 to 24 A part, determine the derivative of function using the limit approach, and B part, determine the slope at x is equal to 1, x is equal to 1 and x is equal to -2। यानी पहले पार्ट में आपको बोला है आपको निकालना है डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का। उसको हम लिखते हैं f प्राइम x। ठीक है, इसको लिखते हैं f प्राइम x से हम डिनोट करते हैं। और हमें ये है कि लिमिट अप्रोच से हमें करना सॉल्व। बी पार्ट में क्या है, डेरिवेटिव जो स्लोप लिया है, डेरिवेटिव स्लोप एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1, स्लोप एट पॉइंट -2। ठीक है, हमें ये सॉल्व करना है। तो हम पहला पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1 से लेकर 24 तक जो है ये अपनी कंडीशन है। ठीक है, दो पार्ट निकालना है। 1 पे है आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन आपके पास 4x + 6। अगर मैं इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव लूं डायरेक्ट, तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा f प्राइम x आपको आएगा 4। ठीक है, ये आएगा ना। तो बट हमें यहाँ पे कंडीशन दी हुई यूजिंग लिमिट अप्रोच से हमें सॉल्व करना है। अब यूजिंग लिमिट अप्रोच है क्या, जो f प्राइम है वो किसके इक्वल होता है, f प्राइम x लिमिट डेल्टा x approaches to 0। और यहाँ पे आता है डेल्टा y ओवर डेल्टा x। सही है, ये आपके पास क्या मेथड है, ये है लिमिट अप्रोच मेथड। तो हम इसको हम करेंगे। डेल्टा y का मतलब क्या, आपके पास f2 - f1 x2, डेल्टा x का मतलब x2 - x। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आपके पास। तो यहाँ पे हमें निकालना है डेरिवेटिव। ठीक है, बाय यूजिंग लिमिट अप्रोच। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला f प्राइम x। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ठीक है, अब डेल्टा y और डेल्टा x का मतलब क्या है, डेल्टा y का मतलब क्या है, अब पहले हम ये लिखेंगे लिमिट डेल्टा x 0 और डेल्टा y का मतलब क्या, आपके पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x f ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x। अब ये देखो, अब लोगों को कंफ्यूजन होती है, ये तो आपका आ गया f ऑफ x, ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x कैसा है, तो वो डेल्टा x आपका स्टेप है। ये समझो ये आपका f2 है, ये आपका f2 है या y2 है, और ये आपका क्या है, ये f1 है या y1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने फर्स्ट आपकी पोजीशन, ये पॉइंट ये है, आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, आपने क्या एक कदम स्टेप बढ़ा आगे। ठीक है, ये आपका y1 था और ये आपका y2 हो गया। तो y1 से y2 जाने के लिए मैंने क्या किया, y1 प्लस मैंने स्टेप लिया, उसको स्टेप कर लिया डेल्टा x। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मैंने f ऑफ x प्लस डेल्टा x लिखा है। सही है, ये है फॉर्मूला लिमिट अप्रोच का। तो अब यहाँ पे f ऑफ x प्लस डेल्टा x में क्या करना है, इस सवाल में
इस सवाल पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एफ ऑफ डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे, पहले हमें ये चीज निकालनी है, फिर ये तो हमें गिवन है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहां पे एक्स आ रहा है, ये जो आपके पास है, वहां पे क्या लिख देंगे हम, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया प्लस 6 आ गया, ठीक है। सही है। यहाँ पे एफ ऑफ जो ये जो है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। ओके, सो हम आगे चलते रहेंगे। एफ ऑफ एफ प्राइम एक्स, ठीक है, क्या है, लिमिट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच डेल्टा एक्स अप्रोच 0, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ये पूरे ये जो आपके एफ एक्स की जगह जो है वो हम ये लिख देंगे, ठीक है। वो क्या आपके पास 4x प्लस 6, ठीक है, और ये ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर फॉर्मूला का ये माइनस यहाँ मौजूद है, डिवाइड बाय हाँ डिवाइड बाय आपके पास है डेल्टा एक्स, ठीक है। हाँ, इस सवाल को अब आगे और बढ़ाते हैं। तो ये एफ एफ प्राइम, ठीक है, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये 4 जो है ये पूरे ब्रैकेट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या रिजल्ट आएगा 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या ओपन करेंगे इस एक्सप्रेशन को, देन जो इसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, अगेन माइनस प्लस माइनस, दो जगह है, तो सो 4x माइनस 6 डिवाइड बाय आपके पास क्या आएगा, डेल्टा एक्स, सही है। यहाँ पे ये चीज समझ में आया, सही है। इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको भी मैं रब कर देता हूँ, सही है। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहे होंगे, सी दिस 4x and this 4x will be cancelled, तो we have f prime x is equal to limit, like here, you know, limit delta x approaches to 0, you know, for delta x in numerator side, we write here, okay, and from denominator side, sorry, from numerator side 4 delta x minus 6, so 4 delta x minus 6 and divide by
delta x. I think we miss out something. You know, 4 here, 4x plus delta x plus 6. I think I think we forget here. Okay, this 6 and this 6 will be cancelled. So we, from numerator side, you know, 4 delta x and numerator side delta x, and this delta x, you know, we cancel, and then f prime x is equal to a limit delta x approaches to 0 and 4. You know, we know the property of limit. You know, limit of a constant function is, you know, constant, right? Is equal to constant. So see, 4 is constant. So a result, you know, its result would be like same constant, right? 4. So 4 is the answer. Okay. So we have done first part. Okay. Now we're going to solve second part. In second part, so in second part, we have to find slope at 1 and slope at -2. So, you know, first you need to find f prime x. So in first part, we have done it already, f prime x. So f prime 1. So we just put up here x is equal to 1, f prime 1. So f prime 1, because there's no x here, there's no variable here. You know, so this doesn't change, so answer remains same, 4. Okay, and then similarly for f prime -2, f prime -2, you know, is equal to 4. Okay, okay, we have done first question. Now we move to the question. So now um, question number, you think which part is difficult? You think, okay, question number 10. Okay, now question number 10. We solve question number 10. Okay, you know, same thing. You know, please note down. You know, we have to first part. In first part, we have to find derivative of function using limit approach. From every questions. This has two parts. Uh, Determine the derivative of function using the limit approach, and second is slope at x equal to 1 as x equal to -2. Anyway, so now question number 10. Okay, question 10 is function is equal to -3x² -10x. Okay, okay, so we need to find derivative of function. Okay, first in first part we have to find derivative of function, and then in second part we have to calculate f prime of 1 and f prime of -2. So first we need to find f prime x. So limit approach method, and by the way we don't use limit approach, and we do direct method. So -3, see this term -3x, derivative of this term is 3 times 2 is 6. You can watch in my other videos. You can see I have taught how to calculate derivative, directly. Okay, so but now here in this book, you are asked to find the derivative of function using the limit approach. So derivative of -3x² is -6x, and derivative of -10x is -10. So final answer would be like, okay, okay, your answer should be like -6x -10. This is the f prime x. Okay, but life is not easy. Okay, so we have to use
limit approach method. So again, so what we do, like, see here where you see x, and then you transform from x to x plus delta x. Okay, so here's, see x power 2. So here we write x power 2. Just we replace x by x plus delta x. Minus tan, okay, x plus delta x. Okay. So this is f of x plus delta x, okay, minus f of x. We have f of x is minus 3x squared minus tan x, minus 3x squared minus tan x. So, okay, so in denominator side, we write delta x. Okay, just I forget it, I didn't write limit here, right? So this here, I should write a limit delta x approaches to 0. I'm sorry, I didn't write it, so I forget to write. So anyway, so this whole thing is equal to f prime x. Okay, so okay, we we solve further. Okay, so now we need to use a plus b whole square. We know a plus b whole square is a square, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. ठीक है? Okay, so limit okay, so we apply this formula in numerator side. So 3 times of c here, okay, 3 times of x square. This is a is equal to x, b is equal to delta x. So x is equal to, sorry, x square plus, according to this form, 2ab, 2 times of x delta x plus delta x square, okay, minus this tan will be multiplied by this term and this term, and then result is tan x minus plus minus, and this minus and plus again minus 10 times of delta x. Okay, so again here is minus, this minus sign change, because of this minus sign, and you see in this bracket, rectangle bracket, minus, this minus sign, changes, change, this minus sign, uh, you know, uh, you know, anyway, so so we know minus minus plus 2x squared, and this minus again plus, this minus sign changes inside, inside, uh, uh, you see each term is, minus into plus, just actually transform, actually
change sign actually, हर देखो टर्म्स में आपको साइन चेंज कर दिया, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10x ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और नीचे डेल्टा x हो जाएगा, ओके। Always remember, don't forget to change this sign, minus to plus, plus to minus, okay. Okay, so we solve further. And limit now we cutting this limit. Limit delta x approaches 0. So यहाँ पे अब देखो कि 3 जो है से मल्टीप्लाई होगा, 3x square 3x square plus 3 times 2 is 6x, 6x delta x, and 3 again, 3 times of delta x square, and this minus 10x minus 10 delta x, and this one is plus 3x square and plus 10x. Okay, again, this is minus 3x square, so I forget this is minus. Okay, this is minus. Okay, this is minus 3x square. This should be minus. Okay, this minus sign turns into different sign. In this bracket, so minus plus minus, and this minus plus again minus 3. Okay, so divide by delta x. Okay, so you see here 3 minus 3x square plus square will be cancelled. Okay, minus this minus 10x, this minus cancel. Okay, so in numerator side, remain in numerator side, so remain 6x delta x this minus 10 delta x divided by delta x. So we take common from numerator side delta x. So and this 10 delta x, this common term, delta x, ये delta x ऊपर हम कॉमन लेंगे, ठीक है, और नीचे से हम कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास आ रहा है, so delta x approaches to 0, तो क्या बच रहा है, -6x -10, ठीक है। हमने क्या किया है, डेल्टा एक्स कॉमन लिया है, तो नीचे जो है डेल्टा एक्स में कैंसिल हो जाएगा, ये चीज डेल्टा एक्स कॉमन जो लेंगे उससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास बचा है डेल्टा एक्स अप्रोच 0 -6x -10. So you see there's no delta x here, so answer would be like -6x -10. So this is your answer. Okay.
अब सेकंड पार्ट हमें देखना है, सेकंड पार्ट में क्या था, हमें निकालना है एफ प्राइम वन और एफ प्राइम माइनस टू। जस्ट हमें क्या जस्ट करना है, अप्लाई करना है, पुट करना है एफ प्राइम वन के पास क्या आएगा, यहाँ पे एक्स की जगह हम प्लग इन एक्स इक्वल टू वन, सो माइनस 6 minus 10 and then which is equal to minus 16. Okay, this answer. And we also have to calculate f prime minus 2. Just we put up x equal to minus 2 here in, ठीक है, यहाँ put up करेंगे and then see minus 2 and minus minus plus. Okay, 6 times 2 is 12. 12 minus 10. 12 minus 10 is 2. So, okay, this answer. I hope you understand. It's not difficult. So, first, in first part, we use limit approach. We have learned it. Okay, now I'm going to review it. In first part, we use limit approach. Limit approach is like formula for limit approach. Limit delta x approaches 0, and inverse side delta y and inverse side delta x. Okay. So in second part, we have to calculate slope. Actually, slope at x equal to 1 and x equal to minus 2. So limit delta x approaches 0, delta y or delta x. Actually, basically, this is slope. Okay, this is slope. Okay, आप जो है जो दूसरे क्वेश्चंस है वो आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और कोई भी मुश्किल हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। Thank you for watching.